जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अभी गुफ्तगू में एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत के साथ अभी गुफ्तगू में होऊंगा जो तारुफ की कोई मोहताज नहीं है। आप सब इनको जानते हैं, इनको सराहते हैं, एंड वी ऑल अप्रिशिएट हर वर्क, वी ऑल अप्रिशिएट द पर्सनालिटी दैट शी इज. Well, she's a very well-renowned personality, a very renowned politician, and she has been the former chief of the National Commission for Women. एंड मैं उससे भी बढ़कर एक्चुअली मैम मानूंगा कि शी इज अ फौजी वाइफ भैया। तो मैं कहता हूँ कि फौजी जो है ना हमारे देश के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड अ फौजीज वाइफ इज ऑलवेज नॉर्मली इट्स कंसिडर्ड टू शी इज कंसिडर्ड टू बी 2 ranks सीनियर टू अ हस्बैंड. सो एनीवे, सो लेट्स गो अहेड एंड स्ट्रेट अवे. मैं एक्चुअली अगर तारुफ की तो मोहताज है नहीं, मगर मैम की तारीफ में मैं इतने पुल बांध सकता हूँ भैया. But let's go on and let's go in conversation with Mrs. Rekha Sharma. Ma'am, Jai Hind and thank you very much for जय taking your हिंद. time, ma'am. जय हिंद अली. जय हिंद. Thank you, ma'am. Ma'am, सबसे पहले तो ये बताइए, we all are in favor of women empowerment, we all are for women rights, and ये तो बड़ी अच्छी बात है. मैम, आपने बहुत ही अच्छा काम किया and your contribution is immense. So, मैम, क्या ये जज्बा, ये पैशन स्टैंडिंग अप फॉर women rights आपको, आपके अंदर ये शुरू से था बचपन से? How did it all start, ma'am? Let's start from the beginning. See, in my family there was no discrimination. First of all, हमें लगा नहीं बड़े होते समय कि कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन मेरे ब्रदर्स और हम में है. बट going out and facing the world, when you grow up and face the world, you see that things are happening around, what things are happening around you. बहुत बार मैंने देखा that women were not treated well. बाहर की दुनिया में, दो आई वॉज मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर, वहां पे बहुत इज्जत के साथ महिलाओं से पेश आते हैं. मुझे लगता है जिस तरह से आर्मी में महिलाओं के साथ, विमेन के साथ पेश आते हैं, वैसे बाहर सिविल में बिल्कुल नहीं आते. एंड व्हेन आई यूज्ड टू सी द अनदर वर्ल्ड व्हिच इज सिविलियन वर्ल्ड, that was totally different, and I used to stand for other women, always and every time. चाहे वो रास्ते में कोई ईव टीजिंग होते देख लूं किसी के लिए ऊपर, या बस में, या कहीं पे भी, I used to stand. Even in the party, I joined political party at a young age. अगर पार्टी में भी मैं देखूं कि किसी के साथ कोई गलत तरीके से बात कर रहा है किसी लेडी के साथ, तो I used to stand up for them. And many a times I suffered because of it, because uh, that women many times used to get away, उस लड़ाई से दूर हो जाती थी. But I used to be in middle of that fight all the time, because I never could take कि कोई mistreat करे, not only sexually, otherwise also. equality जहां पर भी मुझे लगता था कि भंग हो रही है या इक्वालिटी नहीं मिल रही है किसी भी जगह पे, आई यूज्ड टू स्टैंड अप फॉर दैट वुमेन. फॉर माई सेल्फ, यस, it took me long time to reach where I was and where I am today. But I stood on my grounds, and वो मेरी एक स्ट्रेंथ है कि मैंने लंबी लड़ाई लड़ी, और मुझे लगता है वो जड़ें पक्का करती हैं लंबी लड़ाई. मैम, जब आप नियुक्त हुई एज द चीफ ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, आई मीन उस दैट्स वो एक ऐसा ओहदा है where you, it's the contribution is immense and you get a chance to serve the community, to serve the country in a very powerful way. In fact, it's a very powerful appointment. मैम, हाउ डिड, जब आपको नियुक्त किया गया, जिस दिन जब आपको वो मैसेज मिला that you have been appointed as the chief of the National Commission for Women, how was that feeling? Could you describe what the chain of thoughts that came through your mind and जो आपने सोचा कि मैं क्या तब्दीलियां लेकर आऊंगी, इस पोजीशन में होंगी उस टाइम पे? मैम, See, I was appointed as a member first, so it was sudden, but I was in my thoughts. वो कहते हैं कायनात से कुछ मांगो तो मिलता है. So मैं बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद यहाँ पहुंची थी, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता था कि एक फोन आएगा और मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे, और ऐसा ही कुछ हुआ. मैं आउट ऑफ कंट्री थी और एक फोन आया, एंड माय लाइफ चेंज्ड. एंड वो जो मैं करना चाह रही थी पूरी जिंदगी, दैट आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड फॉर बेटर,
मैं नहीं कर सकती पूरा दुनिया तो, लेकिन जितनी मेरे अंदर कैपेसिटी थी, जितने मेरे मुझे मौका मिला जो करने के लिए, मैंने वो पूरी तरह निभाया। क्योंकि मैं इतनी लंबी देर से वेट कर रही थी, तो मैं वो वेस्ट नहीं करना चाहती थी। चाहे वो मेरे 2 साल एज़ अ मेंबर, 1 साल एज़ अ वर्किंग चेयरपर्सन और 6 साल एज़ अ चेयरपर्सन। My tenure was the longest ever in NCW. एंड आई यूज टू काउंट ईच डे कि आज मुझे ये करना है। और मेरे हमेशा 3 महीने के टारगेट्स बनते थे एनसीडब्ल्यू में भी, चाहे एज मेंबर और एज अ चेयरपर्सन। और उन टारगेट्स को पूरा करने के बाद से पहले ही इनफैक्ट अगले 3 महीने के टारगेट की ये काम करने हैं मुझे। We were not only working on the complaints, which people think that NCW is working on the complaints only, but we were, especially me, when I took over, I thought that we should work in a way that women should not have any problem and they should not come for the complaints. They are empowered. So we were trying to empower women at each and every day. I used to plan कि उनको कैसे strengthen करना है, चाहे उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, सोशल एम्पावरमेंट हो, लीगल एम्पावरमेंट हो, किसी भी तरह की एम्पावरमेंट में मैंने एक एक स्टेप पे डिजिटली एम्पावर करना है उनको। तो बहुत नई चीजें हमने की। और मैंने जैसे कहा कि अगर सपना इतनी देर तक देखो और अचानक आपको वो मिल जाए जिसके लिए आपने सपना देखा हो, बिकॉज आई केम इन पॉलिटिक्स टू चेंज द वर्ल्ड फॉर बेटर। एंड वो मुझे एक मौका चाहिए था और मैंने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। दैट्स सो नाइस मैम। मैम जैसे फौज में होता है, हमारी पलटन, हमारी रेजिमेंट, हमारी यूनिट, हमारी फैमिली होती है, वी आर फ्रॉम दैट कम्युनिटी एंड इट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग फॉर एवर। लाइक कल की या बात है मैम, माय माय जो अभी जो कमांड कर रहे हैं मेरी रेजिमेंट, मैं तो फौज से सेवा नियुक्त हुए 16 साल हो गए, लेकिन उनसे एक डीओ लेटर आया था अबाउट द नेक्स्ट रेजिंग डे वी आर गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग एंड ऑलरेडी मेकिंग प्लान्स। तो मैम आपकी सर की यूनिट से जब आप अपॉइंट हुई थी, तो व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ द लेडीज, or not only of the officers ladies but of the men as well, of the jawans, JCOs? They must have felt proud, they must have felt psychologically, अरे भाई हमारा कोई है उस ओहदे पे। How was that man? actually this question should go to them, but I have met many ex CEOs also now after I took over. बहुत सारे सीईओज जो जनरल बन के रिटायर हुए हों, और उनका सिर्फ ये कहना था कि अगर तुम आर्मी में होती तो तुम जनरल चीफ तक बनती। तो There, वो that's true, बहुत that's true. वो बड़ी बहुत बड़ी बात थी। मैं तो एक आई वाज जस्ट 20 व्हेन आई गॉट मैरिड एंड केम इन आर्मी। दैट इज माय फैमिली, दैट इज माय अनदर फैमिली। एज यू सेड कि आर्मी में वंस इन आर्मी यू आर ऑलवेज इन आर्मी। तो बिहार रेजिमेंट विच इज माय हस्बैंड्स रेजिमेंट, 6 BR मैम, मुझे if I'm not mistaken. 6 बिहार प्रिसाइजली, यस। वो अपनी लगती है जो अभी भी, और लेडीज हो या ऑफिसर्स हो। इनफैक्ट बहुत सारे ऑफिसर्स ग्रुप में भी मैं हूँ, अभी तक हूँ, जिसमें सिर्फ ऑफिसर्स हैं, बट एज अ वाइफ ऑल्सो आई एम देयर इन दोज ग्रुप्स। सारे कनेक्टेड हैं। दे फील नॉट ओनली प्राउड, दे फील दैट देयर फैमिली मेंबर इज डूइंग समथिंग गुड। और स्पेशली मुझे कुछ जो पुराने सीईओ जो मेरे हस्बैंड से भी पहले सीईओ रह के निकल गए यूनिट से, उनसे दे आर लाइक फादर एंड दे ट्रीट मी लाइक अ डॉटर। और उनसे जब वो विशेष मिलती हैं, स्पेशली आई वुड लाइक टू नेम वन, एक कर्नल Yes. चौधरी हैं हु इज इन लखनऊ। ही लव्स मी लाइक अ डॉटर एंड बहुत प्यार से मेरी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी वो सारे ग्रुप्स में डालेंगे, सबसे बात करेंगे। सो इट फील्स नाइस, इट्स रियल फील नाइस। So in army, you always have a family other than your own family. There's a family which is regimental, and you belong to them. Ma'am, I've had the honor of interviewing some lady generals, like General Madhuri Kanetkar, General Punita Roda. So there have been a few ladies who have reached to the rank of general, and आपने खूब फरमाया बिल्कुल मैम, हम आप यकीन नहीं मानेंगी, कल की बात है। I was speaking to some officers, they were saying अगर रेखा मैम अगर फौज में होती हैं as an officer, she would have become a general। और वही आप बात आपने करी, बिल्कुल सही बात है मैम। मैम let's, जब मैं फौज में था, what I saw my superiors, they never discriminated between Ali or say Major Mohammed Ali Shah or Major Rekha Saxena. I'm just giving a hypothetical name. तो Mhm. ऑफिसर तो ऑफिसर था कि जो काम
अगर ये मेजर अली कर सकता है वो काम, मेजर रेखा ये काम कर देंगी, यू नो. सो इट्स लाइक वी नेवर सॉ इट लाइक अ जेंटलमैन ऑफिसर और लेडी ऑफिसर. इनफैक्ट अभी अकेडमी में पहले होता था जेंटलमैन ऑफिसर, जेंटलमैन कैडेट, लेडी कैडेट्स, फिर हो गया ऑफिसर कैडेट्स. या सो या. नाउ वी आर जस्ट ऑफिसर्स. तो मैम, तो कल की बात है, एक व्हाट्सएप ग्रुप में समवन रोट द लेडी ट्रेनर्स, एक ट्रेनर्स का ग्रुप है ऑफ स्पीकर्स. सो आई रोट लेडी ट्रेनर्स. हम लोग फौज में होता है तो हम ऑफिसर बोलते हैं. Now what is your take on this? I mean, when we say a lady doctor, a lady officer, or a lady trainer, or do you think it should be just a doctor, just an officer, just a trainer, that thing के भाई? जी मैम. बहुत सारी चीजों में ये जेंडर हटा देना चाहिए. और मुझे लगता है ये डिक्शनरी से भी कई चीजें हटानी चाहिए, लाइक चेयरमैन. सो टिल नाउ मेनी पीपल कॉल मी फॉर्मर चेयरमैन. सो चेयरपर्सन इज द राइट वर्ड. बहुत सारी चीजों में एक्ट्रेसेस बोलते हैं लोग. एक्टर इज अ एक्टर. फीमेल एक्टर और मेल एक्टर, दे आर एक्टर्स. सो हम लोग कहीं ना कहीं वही डिस्क्रेडिट करने के लिए ये कहते हैं. ऑफिसर इज अ ऑफिसर, वेदर अ मैन और अ वुमन. As you said, duties are same, they are doing everything same. So why we always put gender pressure on them? We have to learn. Not only Indians, but the world needs to learn, because in dictionary also many words, as I said, should go. uh, f- Lady principal. A principal is a principal. Lady VC. Whereas I see very few VCs. I always talk to those VCs ki why only male VCs are there and running universities, why not female? But ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, which is in our DNA, I think. Not only in India, all over world this is, that we are discriminating between genders. And I'm not talking about male and female, there is third gender also. So if anybody who is doing the same work should be given credit or discredit similarly. Work is work. एंड वर्क में कोई वो नहीं होता क्रेडिट, वो जेंडर नहीं होता. मतलब आप जेंडर को क्यों लेके आते हो हर हर शब्द के साथ? एज आई सेड कि चेयरमैन बोलते हैं, वैसे ही बहुत सारे मैडम एंड सर में भी बड़ी प्रॉब्लम है. इन इवन इन पुलिस, सर के साथ मैडम भी लगाते हैं, यानी एसपी सर मैडम, वो सर जरूर लगाएंगे. अब बीच में एक वो सरिंग, और मतलब उनको समझ नहीं आता कि मैम भी एसपी हो सकती हैं या डीजी हो सकती हैं. मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स इन पुलिस, इवन लेडी ऑफिसर्स who are at the rank of DGs, SPs, IGs, but they also feel कि जो नीचे लोग काम कर रहे हैं उनके, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो सर कहें कि मैडम कहें. सो दे यूज बोथ द वर्ड, सर और मैडम दोनों. सो यू मस्ट हैव सीन अ पिक्चर, उसमें भी सर मैडम कहती है वो पुलिस में. तो ये हमारी बहुत साल लगेंगे मुझे लगता है. वी शुड वर्क ऑन इट. वी ऑल शुड वर्क ऑन इट. एंड एवरी टाइम somebody calls me chairman, मैं उसको रोकती हूँ कि चेयर पर्सन है भाई. Even somebody was a young girl, I saw a video where she is saying why it is called man-made, why it is not called a person who made. Why always we say man-made? Even my grandson once, women are not making anything, Nani. Why we are saying man-made? So even one day he was talking to my daughter and he said that we don't play with girls. They are playing girl games. You know, games also have girl games. मैम, रंग भी लोगों ने बांट दिया है. रंग पिंक रंग गर्ल्स का है, बांट दिया है. ब्लू बॉयज का है. Yes, I go to the toy shop to buy toys for my grandchildren, and this I always tell them 3 साल के बच्चे के लिए दिखाना, and they say boy or a girl. So I say, what is your problem? Toys में भी कोई boys और girls होता है? कहते हाँ, a boy cannot play with a doll. मैंने कहा why not? Why not a boy can play with a doll? So we are discriminating between everything, toys, colors, games, everything.
और ये चेंज करना हमारी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है हम लोगों को हर बात पे टोकना पड़ेगा बच्चों को। अब नाउ व्हेन आई सी माय डॉटर रेजिंग हर सन in a proper way, I feel proud that she is teaching that 6 year old how to make chapati, how to make food, how to cut vegetables. So this is the way we should raise our sons. I think next generation will change then only. बिल्कुल मैम। मैम आपने वाइस चांसलर की बात की, लेडी वीसी। मैम अभी बड़ी खुशी की बात है कि एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर हैं वो लेडी, वाइस चांसलर, फर्स्ट लेडी वाइस चांसलर। तो द Yes, yes, फर्स्ट I know. चांसलर वाज द चांसलर लेडी हो चुकी है एएमयू में, बट वाइस चांसलर इज अ लेडी। एंड इससे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया में भी, तो इट्स अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। Yes. इट शोज प्रोग्रेस। इट्स आई एम वेरी 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 हैप्पी टू सी दैट। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ मैं, बड़ा अच्छा दिलचस्प किस्सा है। मैम 2008 में मैं नागालैंड में पोस्टेड था विद द असम राइफल, तो मैं दिल्ली आया था फॉर द रिपब्लिक डे परेड। एंड तब मैं असम राइफल्स, बिकॉज असम राइफल्स इज पार्ट ऑफ द पैरामिलिट्री, वी डू नॉट मार्च विद I द know आर्मी। my husband was once in Assam Rifle, so I know. करेक्ट मैम, जी जी जी। Yeah. Mm. तो मैम जब मैं दिल्ली आया तो हम परेड ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड जब 15 जनवरी को आर्मी डे होता है तो वी वर टोल्ड कि नहीं नहीं, असम राइफल्स विल नॉट मार्च, द आर्मी कंटिजेंट विल मार्च। तुम अच्छी कमेंट्री करते हो, तुम कमेंट्री बॉक्स में आ जाओ, तुम कमेंट्री करना। आई वाज वेरी वेरी हैप्पी, आई वाज ओनली टू हैप्पी टू डू द कमेंट्री। फिर मेरे को एक और बड़ा अच्छा स्पेशल इनविटेशन आया टू गो टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाउस। जनरल दीपक कपूर वाज द चीफ आर्मी स्टाफ, Mhm. to go and do the commentary from there for the guest, the president of India, defense minister, prime minister, all the top brass basically comes है। तब मैम मैंने कहा ये मौका है, मार दो चौका, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तो मैंने माइक पे बोला, I have come to Delhi for the Republic Day parade. Why is it that we see only gentlemen officers leading the parade? Why is it that we've never seen a lady officer ever lead the parade? ऐसा उस टाइम तक भी होता था कि जनरल ऑफिसर, लेडी ऑफिसर। So, and the lady of and the naval contingent, the 2IC, was being led by Lieutenant Commander Gauri Mishra, a very dear friend of mine. We are still in touch. अब वो कमांडर होके वो सेवा सेना नियुक्त हो गई हैं। तो ये बात यूनिवर्स में कहीं ना कहीं मैंने छोड़ दी। और 2015 में मैम कमांडर संध्या चौहान लेड दी नेवल कंटिजेंट, तब बैरक ओबामा साहब आए थे। एंड कैप्टन शेरगिल, she was later on she was the parade adjutant। and मैम 2019 में ये बड़ी खास बात हुई, बड़ी अहम बात मैं बताऊंगा। the Assam Rifles marching contingent was led by a lady officer, Major Khushbu Kanwar। I'm in touch with her, not just her, the entire contingent was of ladies। और अब तो ये आम बात हो गई है, इट्स अ वेरी शान की अब तो बात है। 26 जनवरी, ये लास्ट 26 जनवरी, all the women were commanding everywhere, they were commanding, yeah। करेक्ट मैम। मेरी एक और दोस्त है मैम, वो शी इज अ डॉक्टर, मिया दीक्षा। सो शी वाज चोजन फॉर द, वो स्पेशल फोर्सेस में है, मरून बेरे एंड बलिदान बैज। आई एम वेरी एनवियस। मैं मरून बेरे नहीं पहन पाया, यू वेयर इट एंड इट्स अमेजिंग। मैम अच्छा एक अहम सवाल मेरे दिमाग में है एक आपसे पूछना मैम। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं मैम, बिकॉज वी ऑल स्टैंड वुमेन एम्पावरमेंट। मैम ये केस ऐसा है कि फर्ज करिए that a person is working with a company and the boss is a lady, so but things didn't work out, so one can part ways amicably. There have been cases where people part ways amicably, and that's how it should be done. But here the it wasn't parted amicably. The person was insulted, humiliated, and then thrown out basically for no fault, for no reason। दादागिरी थी बेसिकली। सो देन द पर्सन रोट एन ईमेल कि भाई मेरी जो ड्यूज तो है, तनख्वाह तो बनती है, मेरा फुल एंड फाइनल बनता है, जो नोटिस पे होती है वो तो पूरी करो। उसको जवाब में क्या आता है, यू विल नॉट गेट एनी मनी, यू हैव थ्रेटेंड अ लेडी व्हिच इज अ क्राइम, सो एक्शन विल बी टेकन। देन दिस लेडीज हस्बैंड आल्सो रोट कि भाई तुम्हारे पे एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि तुमने थ्रेटन किया है, लेडी तुम्हें हैरेस किया है। अब मैम वो तो बंदा अपना हक मांग रहा था ना, वो हैरेसमेंट तो नहीं करा था। तो आई थिंक the law in our country favors the ladies, and and rightly so, it should be done। There are very few minute cases where some women they tend to misuse the law, and in my view an exemplary punishment should be given to them as well for defaming the entire community and for misusing the law। So what is your take on that, ma'am? Ali, firstly I'm hearing one side of story.
You also have heard one side of story. I don't know what is the side of the dead lady officer. So I would like to listen to her also before I give this remark. But yes, this is the society where women are also very much part of it. And if men are doing something wrong, sometime, and I can again say very few times, women are also at wrong, and law is for everywhere the same. If we can give punishment to men on doing something wrong, we can give punishment to the women as well. And there are instances where women are, criminals. There are women who are criminals. I went to each and every jail to see the welfare of women who are prisoners. So I see that women are in prison if they are committing crimes. If and in this law where sexual harassment at workplace, there is a provision where women, if they are giving wrong complaint, you can fine a woman also. If the boss was lady and she is doing something wrong, the man can go to the court. He can go to the labor court and ask for his salary. So labor courts are for this only, where they can raise this question. He could have gone there. So I have not heard, again I will say that I don't know what is the story of that women. नहीं, uh, बाद में पैसा रिलीज तो हुआ, तो ऐसी बात नहीं है, बाद में तो क्योंकि देयर वाज नो चॉइस बट टू हाँ, रिलीज। रिलीज बट होना होना भी चाहिए, दे होना भी ट्राई चाहिए। नहीं, अगर वो अलग कहीं रही। दे ट्राई टू थ्रेटन द पर्सन कि भाई अगर कोई लेडी किसी पे दिस फॉरगेट अबाउट दिस सिचुएशन, कोई लेडी किसी पे बंदे पे थ्रेटन करे कि मैं तुम्हारे पे, भला ही फॉल्स केस हो, उसको भी पता है, इसको भी पता है, अगर फॉल्स केस के ऊपर थ्रेटन करें, हाउ सीरियस इज दैट मैन? it is very serious, and that person, the male, can go to the police. Police will do investigation, and after investigation, the FIR can be lodged against a woman also. As I said, this is a woman is also part of this world, and right and wrong, everybody. She is also a person. Sometime I we feel, because our thinking is that a woman is like a goddess, हम उसको pedestal पर बिठाते हैं और उससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वैसे ही बिहेव करे, शी विल बी ऑलवेज राइट. I think women are also doing wrong and right as men are doing, and the law is same for everyone. जो स्पेशल लॉज दिए हैं औरत के लिए, वो अलग चीजें हैं, जहां पर उसको वो टारगेट होती है, देयर शी कैन यूज दोज लॉज. बट इफ शी इज टारगेटिंग समवन, then the law for that male is same which is for female. So every person can go to the police and lodge a complaint, and that person should have gone to the police and lodge a complaint. अगर कोई थ्रेटन करता है तो मुझे लगता है हमें ये जो पेडिस्टल पर बिठाने वाली बात है ना, क्योंकि हमें भी यार गलती करने दो, नॉट लाइक दिस, बट छोटी छोटी गलतियां, फीमेल कैन डू अ रॉन्ग इन द फैमिली ऑल्सो. हम लोग सोचते हैं वो फैमिली में हमेशा ठीक रहेगी, वो नहीं, वो सहेगी सहेगी, वो नहीं है, ऐसा है नहीं. सोसाइटी इज चेंजिंग. यस, रॉन्ग सबके लिए लॉ सेम है, लड़का हो लड़की हो. अब हम कई बार बोलते हैं कि ओ, शी इज ड्रिंकिंग और शी इज स्मोकिंग. इफ स्मोकिंग इज रॉन्ग फॉर मेल, इट इज रॉन्ग फॉर फीमेल. if why it is not accepted in women if it is accepted in male? So अगर वो हेल्थ इशू मेल में आता है तो फीमेल में भी आता है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज शी इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड. तो ये चीजें समझने की, अगर इफ शी इज गोइंग टू द बार एंड ड्रिंकिंग, इफ इट इज रॉन्ग फॉर मेल, इट इज रॉन्ग फॉर फीमेल ऑल्सो. बट इफ इट इज एक्सेप्टेड फॉर मेल, देन इट शुड बी एक्सेप्टेड फॉर फीमेल. दैट्स ऑल. मुझे लगता है हम जेंडर को हटा देना चाहिए हर चीज से. We should think genderless, whether it is wrong or right. राइट मैम, राइट, एब्सोल्युटली मैम। तो जो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो होती है एट वर्क प्लेस, एंड जो लॉज से इफ अ मैन misbehaves with a lady, he is likely to get punished and he should get the most severe punishment.
So you mean say the laws are the same? In fact, if a lady also, if she harasses a guy, तो जो law है That is not बंदे के posh. लिए, That is not posh. में ये नहीं आता है. Posh okay, doesn't address a male. If a male is being harassed sexually by a female boss, it doesn't come under posh. Posh is only for female. Somewhere people are now talking कि उसमें ये भी include होना चाहिए. Third gender भी होना चाहिए in fact, because third gender get harassed lot many times, not only by men, by female also. So there are talks, people are reviewing laws. In fact, we also reviewed this law. posh में काफी changes आने की जरूरत है, and we suggested few changes to the government. And with the time, I think this law also will change, and men and third gender will also be included in that. right ma'am, right ma'am, in fact you are right, third gender पे बहुत तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि often it's neglected. अगर बच्चे को पहले होता था कि जेंडर कितने होते हैं, दो, मेल एंड फीमेल, अब बच्चे बोलते हैं तीन, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, एंड वेरी हैप्पी, अ स्मॉल चाइल्ड आंसरिंग द थ्री जेंडर्स, वेरी हैप्पी टू सी कि भाई प्रोग्रेस हुई है, दिमाग सही तौर पे चेंज आया है मैम. मैम इट्स सो, There are इट्स, only, I'm sorry, Ali, I'm interrupting. There are two sexes actually. हम लोग gender बोलते हैं. Gender is the thinking around these sex, female और male, और now third sex. जो अब third, fourth, fifth बहुत सारे हो गए हैं. Now it's not about only third. There are many things which are LGBTQ plus हो गया है. So now in India we are talking about third gender, but abroad now everybody is talking about LGBTQ plus. So there are many things which we can talk separately sometime. right, ma'am. Ma'am, and it was been such a, it's been education. The time that you have given me, it's really been education. आपने इतने अच्छे अच्छे मुद्दों पे highlight किया, ma'am. And before, I know you're busy and you are traveling as well, and you know, but before I let you go, any last message from your side you would like to throw out in the universe, ma'am? uh, Firstly, live and let live का बहुत पुराना वो है रूल, बट आई थिंक अभी भी ये जरूरत है कि लिव एंड लेट लिव बिटवीन मेल एंड फीमेल. आई एम टॉकिंग अबाउट, don't disturb anybody's life. Let them give some push if you can, but don't put hindrance. हम एक दूसरे को सपोर्ट बने, मेल फीमेल थर्ड जेंडर whatever. Let us support each other, work towards better society, peaceful society, happy society. We are not talking about happiness anytime. I think we should now talk about happiness for each other, not for ourselves also. Because yes, making one's own self happy is very important, but then working for others is as much important as working for yourself. Thirdly, I for women, I would like to give, which I always talk, that please take your own decisions. Stand by those decisions, whether it is right decision or wrong, but take your own decision. I think then the life will change for yourself, and you will be able to change the life of others. Thank you, Ali. Thank you so much. Ma'am, thank you very much. Very well said by you, ma'am. And ma'am, please convey my regards to sir. And such an honor, ma'am, to Thank be you in so much, Ali. ma'am. Thanks, and we shall meet very soon. Thank We'll you. meet very soon, ma'am. Jai Hind, Bye ma'am. bye. 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 Jai Hind. Jai Hind.